Here, in this scenario of pandemic COVID-19, market is having a stay, pause for fluctuations. So where they determining its equilibrium. So let's warmly welcome each other where we will learn perfect market equilibrium under the prevailing conditions and their influence due to shifts of two market forces, demand and supply. Market equilibrium, price and quantity equilibrium. It marks its presence with the forces of two which fluctuates the whole market, demand and supply. Buyer and seller behavior affects so. Simultaneously chain effects. Demand and supply is affecting individually at their own, but when they both move together, they form simultaneously chain effect. Shifts of demand and shifts of supply have their influence, and the situation says when they both have the increase together same. Scholars, once again we have assembled in this class of learning, and here we are discussing the situation number 2, which is in front of you for the market equilibrium under perfect competition price determination, and this marks you with the simultaneously change in increase in demand and supply. And we were going to discuss situation number 2, and we will discuss simultaneously chain effect, because increase in demand and increase in supply both are increasing to equal to each other, एक दूसरे से बिल्कुल equal है. Let's see the curve of it, then the graphical representation, and this marks you with the word of equal. D राइस इक्वल टू एस राइस, दोनों एक दूसरे से इक्वल राइस कर रहे हैं. एंड हियर वी हैव रिटन दिस थिंग. नाउ चेक, आई हैव शोन यू दिस बोथ थिंग्स. एस इज ऑल्सो मूविंग फॉरवर्ड and D is also moving forward, and it is equal to each other. Look, I have checked it with the chalk. This is more than 3/4, and that also counts here, more than 3/4. And beta, this is the way to judge it. Now equilibrium price will be equal to each other because they are increasing in the same. So that's why there is no line drawn for the P. मैंने देखो आपकी कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं की है P पर जब इक्विलिब्रियम सेकंड की क्वांटिटी को शो किया है, देन चेक, मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ की है, यहाँ P2 लिखा है, बट हम चेक कर रहे हैं कि डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इंक्रीजिंग, एंड दिस इज इंक्रीजिंग ना, बट दे डू नॉट मार्क एनी चेंज, एनी वेरिएशन इन प्राइस, सो देयर इज नो नीड टू राइट P2. मैंने ये आपको समझाने के लिए ही कहा था कि ये P2 नहीं लिखेंगे. क्यों? बिकॉज इट हैज इक्वल राइज इन डिमांड एंड सप्लाई. सप्लाई एंड डिमांड राइज कर रही है इक्वली. जब इक्वली राइज कर रही है, जितनी क्वांटिटी डिमांडेड है, देखो क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड. डिमांड राइज कर रही है उतनी ही क्वांटिटी से जितनी से सप्लाई राइज कर रही है. वी बोथ आर मूविंग विद द सेम. जितनी डिमांड राइज कर रही है उतनी ही सप्लाई राइज कर रही है. दैट वेल गोइंग टू सी प्राइस कांस्टेंट. प्राइस कांस्टेंट because quantity demanded is equal to quantity supplied, so there will be no variation in price. There is no variation in price, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेम रहेंगे, क्योंकि जितनी क्वांटिटी डिमांडेड है उतनी क्वांटिटी सप्लाइड है. सो इक्विलिब्रियम प्राइस इज कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज्ड. क्योंकि क्वांटिटी क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर फ्लक्चुएटिंग इक्वल टू ईच अदर. तो prices are constant and other things are changing. That changing facility will going to be applicable in quantity increase, because both are changing equally. Price have no variation. Price में कोई variation ही नहीं होगी. Price will be same. Price have no
variation, E1 and E2 will reflect at price 1, but quantity will rise. Have whole graphical look, and we are concluding it for this session. Increase in demand is equal to increase in supply, marks the influence on quantity equilibrium, not on price equilibrium. They do not fluctuate the price as the prevailing market price remain constant due to the same quantity demanded and supplied. When they both are equal to each other, so they do not create any influence on price, either rise or fall. Just simply they enhances their output and their utilization of product. So hereby, with this note that we will see each other again, we are concluding it for today by saying thank you for visiting.